आप सबका स्वागत है। आइए, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है। इस फर्स्ट टेस्ट में अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा और आपको इसमें अब सोल्व करने का टाइम मिलेगा ताकि आप इसको हल कीजिए। एक पेज लीजिए, उसमें इसका क्वेश्चनों का आंसर लिखिए। जो नहीं आए वो छोड़ देना, जो आए उसको आप लिख के कमेंट में पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं इनका आंसर तो अगली वीडियो में बताऊंगा ही, पर आप अपना जवाब भी पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज ए मेलेबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कार्बन परसेंटेज ऑफ डक्टिलिटी। थर्ड है, डिफाइन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फोर्थ, formulated the longitudinal stress in thin cylinder. फिफ्थ है, what is torsion. 6, how would a brittle material fail in torsions. 7, define shear center. 8 है, classify the spring on the basis of the helix angle. 9, explain slenderness ratio. 10, where is the auto pretense used. And 11, write down any limitations of Euler's formula. And 12, name down the factor on which bending moment and shear force depend. 13, what is the basis difference between external and internal statics indeterminacy. 14, name down different type of beams. 15, define influence line diagrams ILD. 16, what should be the horizontal thrust for a 3-inch semicircular arch carrying UDL over the whole spans. 17, write down the methods of structure analysis. 18, what is a stiffness. 19, define flexibility. 20, what is the sign conventions in slope deflection methods. And part B, what is the strain energy. Derive its formula for gradually applied axial load. 22, what is the principal stress. Note down the formula. 23, write down the assumptions made in Euler's theory. 24, given the formula of the principal stress and maximum shear stress due to combined effect of the bending and torsions. 25, write a short notes of the grip. 26, enumerate the theories of the failure. 27, derive the expressions for the slope at the free end of the century lever subject to point load at its free end. 28, what are the type of pressure vessel. 29, the appropriate cantilevers on uniform flexure rigidity in loads as shown in figures. What should be the bending moment at fixed and A, ठीक है। डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, इनकी डिस्टेंस है 3 A टू B, B टू C 3 मीटर, और यहाँ मोमेंट है पॉइंट C पर 300 किलोन्यूटन मीटर्स, ठीक है। आपको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है पॉइंट A of 30. Drive the influence line diagram ILD of reactions for a simply supported beams. Write down following. 31, formula of the curvature of parabolic arch. Formula of horizontal
thrust in the three hinged parabolic arcs having the abutment at different levels when it is subjected to UDL over whole spans. Explain Maxwell's reciprocal theorem by the diagram. पार्ट सी जो 20 मार्क्स के, ठीक है। Derive a formula for the bending moment at point C in the figure given below. अब यहाँ से बीच के डिस्टेंस A to C A and C to B B, all distance L और point load W है। 34 for the continuous beams show in figure below calculations the slopes of the deflected shape at B. Also draw the deflected shapes. ये A to B 4 मीटर डिस्टेंस एंड B to C 4 मीटर डिस्टेंस, और इसमें UD 12 किलो न्यूटन पर मीटर से, ठीक है। ओके। 35 calculate the moment of the resistance of given beams if the maximum stress in 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर्स। आपको डायग्राम दिया हुआ है। इसकी लेंथ है 550 एंड विड्थ है 190, ठीक है, और इसकी डेप्थ है 15 ऊपर, ठीक है, और वेब की है 10, ठीक है। फर्स्ट ये है डायमेंशन इन mm में ऑल, और सेकंड है 100 mm डायमीटर है इसका, ठीक है। 36 ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फॉर ए फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान्स L carrying a UDL of W kilonewtons per meters throughout length. 37 draw a shear force and bending moment diagrams. Also write down maximum positive and maximum negative value for the boths. डायग्राम दिया हुआ है। A to B 5 मीटर डिस्टेंस, B to C 2 मीटर, और पॉइंट C पर है पॉइंट लोड 18 किलो न्यूटन एंड A to B UDL 10 किलो न्यूटन पर मीटर्स। 38 a unit movement of the one transmitters is moving from left to right of a simply supported beam of the spans 8 meter. Draw influence line diagram for VA VB shear force at C and bending moment at C, ठीक है। डायग्राम है A to C 3 मीटर डिस्टेंस एंड C to B 5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। अब 39 write a short notes on the tensile strength test of mild steel with the stress strength curve, ठीक है। ओके। 39 क्वेश्चन टोटल, इसकी आंसर वाली जो जल्दी बना के डाल देंगे। थैंक यू। आप सब बस हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी इच्छा, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू।